Hello students, now we'll start the next topic of our subject, business statistics. In the previous video we have started the chapter measures of central tendency or simply measures of averages. Average play a very important role in our life. We take a number of decisions on the basis of averages. An average is a single value representing a mass huge data. By calculating the average, we can be able to know the characteristic features of the whole. That is the advantage. The most commonly used statistical technique is measure of central tendency because other statistical analysis depends on these averages. That's why it's the basic chapter, measures of central tendency. So we have seen in the previous video, there are many methods of calculating the average. The first and the most important, most widely used measure was arithmetic mean. How to calculate arithmetic mean? What are the different formulas? We have already discussed in the previous video. We have discussed the theory and also we have done so many problems on calculating the arithmetic mean. Now we are going to start the next method of calculating the average. The next method of calculating the average is the median. Now in this video we are going to discuss the complete theoretical part of median and then we'll start the problem. Median is the middle value of a series. The whole series, we arrange the whole series and in the whole series we find what is the value at the exactly in the middle of the series. The value which is exactly at the middle of the series is called median. The median is the central value of the data. That is called median. Median divides the entire series into two equal parts. It is the value which is exactly at the center of the distribution. That is called median. So for calculating median, first of all, we need to arrange the data in either ascending order or descending order. After arranging the ascending or descending order, we find the median. That's so simple. So comparatively, just like arithmetic mean, median can also be easily calculated. The only thing we have to find out the central value, which divides the complete data into two equal parts, half part on left side and half part on the right side. That is median. Now, what are the merits and demerits of median? The first most important merit of median is it is rigidly defined. That means the definition of median is very much clear. The value which is exactly at the middle of the series is called median. That's it. No two opinions, no two different meanings. So there is no ambiguity in the definition and meaning of the term median. Rigidly defined. Every author will give the same definition, same meaning of the term median. It is in the value which is exactly in the middle of the series. That's why it is rigidly defined. Secondly, easy to understand and calculate. I'm explaining. You don't find any difficulty in understanding. That means the median is exactly in the middle of the series. That's it. So easy to understand and easy to calculate. We'll see how it can be calculated very easily. Then third one, not influenced by extreme values. Even if there are extreme values like lowest value or highest value, it will not affect the median because median comes in exactly in the middle. Then can be calculated for open-ended classes. If in the class, if the distribution is given open-ended, for example, less than 10 and greater than 100. First class जो दिया है less than 10 दिया, उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 दिया है, उसी तरह last class 800 and above दिया. तो इसको open-ended classes कहते हैं. So even if the distribution is open-ended classes, we can easily find out median. Next, can be determined by inspection. One more advantage, even without applying any formula, only by inspection also we can be able to find out what is the median. Which value lies exactly in the center. So even by inspection we can find out. That is the merit. Last one can be located graphically. Whereas arithmetic mean cannot be located graphically. Here median can be located graphically. Graph के पेपर के ऊपर कुछ lines draw करके हम median मालूम कर ले सकते हैं without applying any formula. I'll explain you in this video how graphically we can find out median.
So we can say these are the merits of calculating median. Now what are the demerits? The demerits are not exact if the number of observations are even. अगर number of observations odd अगर है, just like 7 observations are given. 7 is an odd number. अगर 7 observation है तो 3 left side, 3 right side, 6 हो गए. सेंटर में जो आएगा वो मीडियन है. तो odd number of observations अगर रहेंगे तो easily we can find out the median. But if the number of observations are even, then we will not get exact median. We'll get approximate median. Example 10. 10 observations are there, even number. So we want the median which will be in the center. Center means between 5th and 6th. अब जो center आएगा 5th और 6th के बीच में आएगा. तो बीच में कैसा आएगा? Exactly center में भी हो सकता या बिल्कुल करीब 5th के करीब हो सकता या 6th के करीब हो सकता. तो we cannot get the exact median if the number of observations are even. Next one, does not consider all the items. Arithmetic mean will take into consideration all the items of the data, of the items of the series. But in median, we are taking only the central value and we are ignoring all other values of the distribution. That is the disadvantage. Last one, not suitable for further statistical analysis. अब ये statistical analysis के बहुत सारे techniques हैं, like calculating dispersion, standard deviation, mean deviation, quartile deviation, or then skewness, kurtosis, correlation, regression. ये सारे further statistical analysis में arithmetic mean use होता, median use नहीं होता. So this median cannot be used for further statistical analysis. So these are some of the demerits. But in spite of these demerits, we have many merits of this median. That's why we use this average also. Now quartiles, deciles and percentiles. These are related to median only. Median के वैसा ही quartile, percentile, decile है. तो what are quartiles? The median will divide the series into 2 equal parts, whereas quartile will divide the series into 4 equal parts. ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 will take 1/4 area. 1/4 area of the 1/4 of the total distribution will be taken by Q1. Then Q2 will be exactly in the middle. Then Q3 will take 3/4 of the area. So totally 3 quartiles are there. Q1, Q2, Q3. Q1 is called the lower quartile. Q3 is called the upper quartile. And Q2 is in the middle, that is the median. Q2 जो रहता है, second quartile जो रहता है वो median रहता है. Median और second quartile mean one and the same. Q2 and median means one and the same. Whereas Q1 is a lower quartile, Q3 is the upper quartile. Similarly, decile. Decile will divide the series into 10 equal parts. D1, D2, D3 like that. Just like quartiles. We have 3 quartiles, Q1, Q2, Q3. Quartile will divide the series into 4 parts. So 3 quartiles. उसी तरह decile will divide the series into 10 equal parts. So we have 9 deciles. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. तो 9 quartiles होती है. The procedure, the method of calculating median, quartiles, deciles, same. Only the difference is, in median we take 2 parts. In quartile we take 4 parts. In decile we take 10 parts. In percentile we take 100 parts. So percentile will divide the series into 100 equal parts. Will divide the series into 100 equal parts. So there are 99 percentiles. P1, P2, P3, P4 like that, it will go up to P99. So this is all about quartiles, deciles and percentiles. Now calculation of median. How to calculate the median, quartiles, decile and percentile. पूरों का मेथड एक ही है, खाली डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा. मीडियन में 2 रहेगा डिनोमिनेटर, क्वार्टाइल में 4 रहेगा, डिसाइल में 10 डिनोमिनेटर रहेगा, परसेंटाइल में 100 रहेगा. That is the only difference. Remaining, the procedure of calculating median, quartile, decile, percentile is same. We'll see the problem. We'll do the problem and I'll explain again at that time. So individual observations.
If individual observations are there, median is equal to size of n plus 1 divided by 2. n का मतलब number of observations, number of items. कितने items है? तो n plus 1 divided by 2 item. For example, if 7 items are there, 7 items are there, तो 7 plus 1 8. 7 plus 1 8. 8 divided by 2 is 4. तो fourth item in the series is the median. Fourth item in the series is the median. So only this formula we have to apply for calculating median in individual observation. Size of n plus 1 by 2. That's it. Lower quartile. अब देखिए same formula will be applied, only denominator will change. Instead of 2, now we'll take 4. तो lower quartile Q1, first quartile. तो Q1 is equal to size of n plus 1 by 4, या n plus 1 by 2 था, यहाँ पर n plus 1 by 4. ये क्वार्टाइल है और ये मीडियन है. उसी तरह अपर क्वार्टाइल, अगर Q3 मालूम करना है, थर्ड क्वार्टाइल मालूम करना है, थर्ड क्वार्टाइल विल टेक 3/4 आइटम, 3/4 पार्ट. ये 1/4 पार्ट ले रहा है. फर्स्ट क्वार्टाइल विल टेक 1/4 पार्ट, दैट्स व्हाई 1/4. Whereas third quartile will take 3/4 part. That's why we have to take 3/4. 3 into n plus 1 by 4. So this is Q3. So these are the formulas in individual observation: median, lower quartile, upper quartile. Now sixth decile. Example I have given sixth decile. We can take any decile. तो टोटली 9 deciles are there, D1, D2, D3, D4, D5. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर D6 लिया. कुछ भी ले सकते, कहां तक? D9 तक ले सकते. तो D6, अगर 6th decile अगर मालूम करना है तो साइज ऑफ 6 into n plus 1 by 10. Just now I told decile will divide the series into 10 equal parts. तो डिनोमिनेटर में 10 लेंगे. अब 6th decile मालूम करना है तो 6 into n plus 1. अगर 4th decile मालूम करना है तो 4 into n plus 1. 8th decile अगर मालूम करना है तो 8 into n plus 1 by 10. जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू लोकेट करेंगे हमारे सीरीज में. Then we'll get 6th decile. 65th percentile. Percentile will divide the series into 100 equal parts. P1, P2, P3 up to P99. तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए I have taken an example of 65th percentile. तो P65 is equal to size of 65 into n plus 1 by 100. डिनोमिनेटर में 100 लेंगे, परसेंटाइल है. डिसाइल रहा तो 10, क्वार्टाइल रहा तो 4, मीडियन रहा तो 2. Now 65th percentile. After getting the value, locate that value in the given series. Series में देखिए वो वैल्यू कहां पर आ रहा, जहां पर भी आ रहा वो मीडियन. Note. First arrange the data in ascending, descending order, then apply the above formula. One of the very important point to remember is for calculating the median, quartile, decile, percentile, first you have to arrange the data in ascending or descending order. Ascending order का मतलब increasing order, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 like that. Descending order का मतलब 20, 18, 15, 14, 12, 11 like that. कम होता हुआ वैल्यू डिसेंडिंग है, इंक्रीजिंग होता हुआ वैल्यू असेंडिंग. तो पहले जो भी डाटा प्रॉब्लम में दिया है उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, या बेटर मेक इट वन आई मीन रूल. क्या रूल बना देंगे? हमेशा ऑर्डर असेंडिंग ही रख देंगे, छोटे से बड़ा. सब में छोटा वैल्यू पहले लेंगे, उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं. तो बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन और क्वार्टाइल्स, फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट्स व्हाई यहां पर मीनिंग ऑफ मीडियन में ही हम एक्सप्रेशन दे सकते थे. मीडियन इज दैट वैल्यू व्हिच इज एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द सीरीज आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट्स इट. नाउ डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस वी हैव कंप्लीटेड. Now I am coming to the discrete series. Median is equal to size of n plus 1 by 2 item. यहाँ पर भी size of n plus 1 by 2 था, यहाँ पर भी. डिफरेंस क्या है देखिए. Arrange the data in ascending order, पहला काम. Second, find the cumulative frequencies. अब यहाँ पर आपको cumulative frequencies मालूम करना है. अब नेक्स्ट वीडियो में I am going to explain you the problems. In that I'll explain you how to calculate cumulative frequency. Cumulative frequency मालूम करेंगे. Apply the above formula. ये formula apply कर लेंगे. Look in the cumulative frequency a value which is equal to or next higher value to that value. ये जो भी value आएगा वो value को locate करेंगे cumulative frequency table में.
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में वही वैल्यू चाहिए या उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू चाहिए? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन. Corresponding value of the x is the median. Similar procedure should be adopted for Q1 and Q3. ये जो प्रोसीजर मीडियन का है, सेम प्रोसीजर हम Q1 और Q3 को भी अप्लाई करेंगे. तो व्हाट इज द प्रोसीजर इन डिस्क्रीट सीरीज? फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अप्लाई द फॉर्मूला साइज मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2. साइज ऑफ n+1/2. जो भी वैल्यू आएगा इसको लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में, कॉलम में, और वही वैल्यू चाहिए या उससे हायर वैल्यू चाहिए, जहां पर भी लोकेट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन. ये डिस्क्रीट सीरीज. नाउ कंटीन्यूअस सीरीज. In continuous series, median class is equal to size of n/2. n+1 नहीं है यहां पर, n/2. यहां पर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 है, कंटिन्यूअस सीरीज में n/2. You should not take n+1/2. n/2. Apply the following formula. Median is equal to L plus n/2 minus CF by F into I. CF. First of all, continuous series रहा तो CF कॉलम बना लेंगे. After arranging the data in ascending order, make the CF column. Apply the formula median class is equal to size of n/2. Median class is equal to size of n/2. अब जो भी वैल्यू आएगा उसको मीडियन क्लास आ गया. आफ्टर गेटिंग मीडियन क्लास, अप्लाई द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF by F into I. तो L stands for lower limit of median class, CF stands for cumulative frequency of the class preceding the median class, and F is equal to frequency of median class, and I is the width of the median class, N is equal to sum of frequencies. While doing the problem, I'll go in detail about this formula. Right? Now, locating median graphically. One of the advantage of median is median can be located graphically. Graph draw करके भी median हम find out कर सकते हैं without applying the formula. तो how to locate? There are two types of curves called ogive curves. Less than ogive curve and more greater than ogive curve. इसके लिए एक टॉपिक में कवर अप करूंगा, diagrammatic and graphical presentation. After completing this unit, we'll start a chapter called डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. और वो डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव क्या होता है. तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स ड्रॉ करते हैं, उसको ओगिव कहते हैं, OGIV. तो टू कर्व्स विल बी ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर, लेस देन ओगिव एंड ग्रेटर देन ओगिव. ये दोनों कर्व्स जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो दोनों कर्व्स एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. वो जो इंटरसेक्शन हो रहा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर. तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जहां पर मिल रहा है वो मीडियन आता है. द पॉइंट एट विच दैट परपेंडिकुलर मीट्स द एक्स एक्सिस विल गिव यू द मीडियन. और एक शॉर्टकट मेथड भी है. डोंट ड्रॉ टू ओगिव्स, ड्रॉ ओनली वन ओगिव लेस देन ओगिव. पहला मेथड तो ये है दोनों ओगिव ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. सेकंड मेथड ये है कि ओनली वन ओगिव लेस देन ओगिव ड्रॉ करो. लेस देन ओगिव ड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप, कैलकुलेट n/2 और n+1/2. अगर n/2 कब कैलकुलेट करेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज में. n+1/2 कब कैलकुलेट करेंगे? डिस्क्रीट में या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. ये n/2 और n+1/2 जो भी वैल्यू आ गया उसको लोकेट करेंगे y एक्सिस पे, y axis पे, and put a mark on y axis. Draw a parallel line parallel to x axis. Draw a straight line, and that line should meet the less than ogive curve. वो जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करे आप y एक्सिस से, वो आकर मीट करना लेस देन ओगिव कर्व, और वो लेस देन ओगिव कर्व से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे जब मीट करेगा दैट विल गिव यू द मीडियन. So इसके ऊपर भी 2-3 problems I have taken, and that the problems I'll explain how graphically we can be able to locate the median. And one more thing, for calculating the median, quartiles, decile, percentile, first of all we need to arrange the data in ascending order. Secondly, if the data is given in inclusive type, we have to convert it into exclusive type, then only we can calculate the median. तो हमेशा प्रॉब्लम में एक्सक्लूसिव टाइप डाटा रहना,
इंक्लूसिव अगर है तो हमको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में. दिस पॉइंट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप इन द प्रीवियस वीडियो व्हाइल कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हो चाहे इंक्लूसिव रहो या एक्सक्लूसिव रहो, डजंट मैटर. लेकिन when we calculate median, every time it must be exclusive series. It should not be inclusive series. That's all. So this is the complete theory regarding median. Now in the next session we'll start the problems on median.